We all set our life goals, and owning a one beautiful and comfortable home for ourselves and for our family is one of our biggest dreams. Hi, I'm Malika Sharma, part of Vishkarma Interiors. आज हम आए हैं हमारे पुराने क्लाइंट का रिव्यू लेने जो यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं. Building home isn't just about bricks and walls, but balancing aspiration with budget and creating a space that reflects about your values and lifestyle. At Vishkarma Interiors, our passionate architects and designers have spent many years in turning many families' dreams into reality. We offer not just home but experiences. Now we are excited to hear from one of our cherished clients about her experience of building her home with us. Hello everyone, my name is Dia Singhal and my husband's name is Ashu Singhal. We are a family of 4. I have a son and a daughter. I'm a housewife. I've been living in this house since 2019, so it's been 6 years. We started planning this house in the year 2017 May and completed this site I think in around 22 months. So that's a long story and I would cut it short. So एक दिन क्या हुआ कि me and my husband हम लोग ना ऐसे रात को walk कर रहे थे here in Berenclave only and we were very confused कि घर कैसे बनेगा because we were not satisfied with our architect. So randomly क्या हुआ हमने एक under construction site देखी and we went into that site और वहाँ जाके ना like we were mind blown. हमें समझ ही नहीं आता मतलब ऐसे भी घर होते हैं. So that was beyond our imagination. तभी हमने decide कर लिया कि हमें इन्हीं को ही hire करना है. And since there was nobody to guide us कि भी कौन है क्या phone number है, so what happened कि उनके ना maps and all paperworks were there on the table. तो मैंने उनका picture click किया and we got his phone number, Mr. Jatin Sharma from Vishkarma Interiors. बस तभी ये हो गया कि हाँ इनसे ही काम कराना है. And the very next day we called him and we met. So this was just a coincidence meeting him like this. See, my experience was very good. I would say कि मतलब पूरी site बनने में and any shopping, any decisions तो कोई भी difficulty नहीं आई. In fact ये था कि we were like laymen, हमें तो कुछ knowledge नहीं थी and he was the one to guide us in each and every step. तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें guide किया और जहाँ हम गलत थे हमें ठीक भी किया, जहाँ हमने अपना एडवाइस दिया, अपनी प्रेफरेंसेस दी, उसे बहुत अच्छे से सुना. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड दैट वाज नॉट ओनली द स्टोरी वाज कि तब हमारा बेशक उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप था बट ग्रेजुअली ओवर द इयर्स दिस रिलेशनशिप हैज बिकम मोर डीपर एंड वी आर मोर लाइक अ फैमिली टुडे. तो आज तक भी उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप. ही इज सच अ गुड पर्सन. आइडियाज एंड प्रेफरेंसेस के बारे में तो जो मैंने कभी एडवाइस दिया तो अगर मैं गलत थी तो ही करेक्टेड मी एट दैट पॉइंट इटसेल्फ. हाँ, और जहाँ मुझे था कि मेरी प्रेफरेंस है एंड आई वांटेड दिस वे तो डेफिनेटली ही लिसन टू मी. सो द फैक्ट इज दैट आई कंप्लीटली ट्रस्टेड हिम. So I knew whatever he is going to decide or do would be better because since we are laymen and he is a professional person, so I always told him कि नहीं भैया you do it your way because you know it better. And this is the reason why my site came out so well. So this I completely trusted him. तो ज़्यादा ideas and preferences देने की there was no need. The most memorable part I would say would be our China trip. We went there for shopping like furnitures and lightings. We all went there and in fact Mr. Jatin's wife Malika Sharma also went with us and that was such a memorable journey because not only did we do the work that we did, we became very good friends over there. So हम चारों का बहुत अच्छा bond हो गया था वहाँ से जो आज तक चल रहा है and वो best part था. And not only that, Delhi में भी हम बहुत shopping करते थे. Each and everything was bought with him and with his advice. तो वो भी बहुत enjoyful रहता था और बहुत मज़ा आता था उसमें. So that was the most memorable part I would say. Yeah, I truly believe that new trends and designs keep coming in every field. So ऐसा तो है but I think he had such a futuristic vision that time itself 6 years back कि बेशक 6 years हो गए हैं घर बने में बट आज भी घर ऐसे ऑब्सोलीट या आउट ऑफ फैशन नहीं लगता है.
and the house looks so fresh and you know so up to the mark कि आज भी कई बार क्या होता है कि कोई नया पर्सन मेरे घर में आता है, लोग आज भी मुझे कॉम्प्लीमेंट देके जाते हैं कि हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के। तो आई थिंक कुछ ऐसा ही मेरे घर में है कि लोग मुझे आज भी कॉम्प्लीमेंट करके जाते हैं। वैसे तो द होल हाउस इज लाइक माई ड्रीम प्लेस। आई लव माई कंप्लीट हाउस, बट इफ यू आस्क मी वन प्लेस देन आई वुड डेफिनेटली से माई किचन। And see, even though I don't spend much of my time over there, but still, you know, I feel that is the most beautiful place in my house. It's very practical, very comfortable, and you know, very elegantly designed. So I think that's my favorite place. I think my kitchen is very stylish, you know, very practical and super functional. I think the most beautiful part of my house is the double height wall. This is really, you know, modern and stylish, and this is the most attractive part. And the best thing is that whenever somebody is walking into my house, this is the first place they get to see. सबसे पहले यही देखते हैं, यहाँ पे ना बहुत ग्रैंडनेस आता है, और यहाँ आते ही ना एक बार किसी के मुंह से निकल जाता है कि वाओ दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। देखिए, नया नया घर तो सबको अच्छा लगता है, यू नो, जब नई साइट बनती है, न्यू शिफ्ट हियर, तो सब अच्छा लगता है। द प्रैक्टिकलिटी एंड द यू नो जो असलियत है वो कुछ टाइम बाद पता लगती है। सो नाउ इट्स बीन 6 years, और मैं यही कहूँगी कि ये नए नए की बात नहीं थी। इवन टुडे आई फील माई हाउस इज नॉट ओनली वेरी स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल बट येट वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी कंफर्टेबल टू लिव इन। तो मुझे सीरियसली कोई ऐसी पॉइंट नहीं लगता कि नहीं यहाँ पे मेरा घर लैग बिहाइंड कर रहा है या कुछ कमी रह गई है। एवरीथिंग इज सुपर कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल। I can't answer this question, you know, in just one word, because I have lots and lots of emotions and feelings about this house. So I can frame it in one sentence, and I would say this is a piece of my heart which is coming to reality maybe. I love my house. Yes, definitely. I would strongly recommend Vishwakarma Interiors and Architects. उसमें कोई doubt ही नहीं है. And in the past also I have recommended these people to so many people, and in future also I would say there's no second thought about it. Anybody can go for them, because see, I'm already so impressed by their work and their professionalism. So definitely I would recommend them to everybody. Now I would say Vishwakarma Interiors has become a part of my friends and family for my lifetime. Thank you.